राजधानी भोपाल के समन्वय भवन न्यू मार्केट में सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स का त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महासचिव मनोज वडनेरकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचार्य, महासचिव सुप्रीत सरकार, बी रामकृष्ण नायक, के नागर एवं के पारीक की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन में पेंशन अपडेशन के मुद्दे, सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए मेडिकल बीमा आदि कई विषयों पर चर्चा हुई। Thank you very much. I am the President of All India Bank Pensioners and Retirees Confederation. मेरा नाम KV आचार्य है. We have come down here to participate in the Central Bank of India Retired Bank Officers Federation Triennial Conference. It is a great opportunity for us to meet our old colleagues and comrades. In fact, there are certain issues of the bank pensioners. The main issue which has been agitating the bank pensioners is their pension had not been revised from 1992. So many settlements have taken place. Now the latest one was the 12th bipartite settlement from the awards of side and the 9th joint note by the bank officers side. We expected that in that settlement the pension updation would be announced. In fact, there is a clear judgment by the Supreme Court that both wage revision and pension revision both are inseparable. That means whenever there is a wage revision, there has to be a pension revision, which has been happening for the central government pensioners. It is happening for RBI pensioners. It is happening for NABARD pensioners. Only bank pensioners are omitted. The bank pensioners are the persons who have really contributed to the economy of this country. Right from nationalization 1969, our number of branches were hardly 8,000, all the banks put together. Today it is 1,65,000 branches, and our people are working in remote places, hardship centers, in terrorist affected areas, and they are working for the common people. And there is an all-round economic development of the country which is uncomparable now in the entire world, the way in which banking has grown. And having contributed for the economic development of the country, in the evening of our life, if we should be treated like this, our pension is not even 50% of what the central government pensioners are getting. So we have been agitating on that. We expected that the UOBU and the IBA in their settlement on 8th, when they signed, they would agree for the updation, but unfortunately they agreed only to give some ex gratia, which is not a substitute for the pension updation. It is much less than what is expected. So the issue remains. In the Supreme Court also the case is pending now, and they could have come for an out-of-court settlement, but unfortunately they have not agreed to that. So we hope that the pension fund which is available, nearly 4 lakh crores funds is available. The annual addition to the pension fund is much more than the pension outgo. So managing 3,000 crores for pension updation is not at all an issue when the banks have written off nearly 24 lakh bad loans. Out of that, hardly about 5,000 crores they have recovered. And having gone for so many out-of-court settlements with the borrowers, willful defaulters. Whereas in our case, we have served the country, and for us, this kind of treatment is not acceptable. So even at this age that we have to fight, that is something a tragedy, because senior citizens should be given all respect. There is a senior citizens litigation policy of the government which says that the senior citizens should not be forced to go to the court unnecessarily. Here we are unnecessarily forced to go to the court, though there is a clear provision in the pension regulation. So ये मुद्दा लेके हम और भी लड़ेंगे. We hope that the serving officers and serving employees also will understand, because one day they are also going to retire. So they should do about that. सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स फेडरेशन की
राष्ट्रीय संगठन की मीटिंग हो रही है। इसके अंदर पूरे देश भर से करीबन 300 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स भाग ले रहे हैं और इस समारोह के अंदर हमारे शीर्ष संगठन के अध्यक्ष श्री केवी आचार्य और महामंत्री सुप्रीता सरकार जो चेन्नई और कलकत्ता से यहाँ आए और उन्होंने हमारे सभी साथियों को उन्होंने संबोधित किया। इसी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके प्रतिनिधि, उनके अध्यक्ष श्री विवेक पांडे, उनके जनरल सेक्रेटरी श्री मनोज वाडनेरकर और उनके जो ट्रेजरर हैं श्री अनिल ठाकुर, उन्होंने भी उपस्थिति दी और यहाँ के जो सेंट्रल बैंक के जो भोपाल के रीजनल हेड भोपाल हैं उन्होंने भी भाग लिया। इस समारोह के अंदर हमारे शीर्ष संगठन के पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों के संबोधित करते हुए हमारे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर के जो पेंशनर्स के मुद्दे थे, बैंक पेंशनर्स के मुद्दे थे, उसमें अपडेशन का जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है उसके बारे में बातचीत करी और जो हमें चिकित्सा सुविधा मिल रही है उसमें हमारे को बीमा की राशि जो है करीबन 70 से 80 हज़ार देने पड़ रही है, जो सीनियर सिटीजन के लिए वो काफ़ी अधिक है। उसमें बैंकों का जो है योगदान होना चाहिए। इन मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। अशोक नागर, अध्यक्ष हूँ AICBRF का। मुझे अपने महासचिव की जो वक्तव्य दिया है उसमें सिर्फ इतना जोड़ना है कि हम जो अपडेशन की पेंशन की मांग कर रहे हैं वो कोई पैसा हमें कहीं से नहीं लेना, हमारा अपना फंड है। हमारा अपना फंड 3,50,000 करोड़ के करीब इकट्ठा हुआ है और उसमें हर साल जुड़ता है। हमारी जो डिमांड है वो उसी में से पूरी हो सकती है, लेकिन उसको पूरी ना करके इधर उधर घुमा के ये कहते हैं कि बैंकों के पास पैसा नहीं है। ये नहीं, हमें किसी का पैसा चाहिए ही नहीं। सच्चाई ये है, हमारे को हमारा पैसा है जो हमारे को सही से समय से दे दिया जाए तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पेंशन की जितनी भी डिमांड है वो सारी उसमें पूरी हो सकती है।